discussion on that. Okay, we'll do the theory as well as the practical also of that. Okay, so today's topic name is reverse engineering. Okay, so first of all, what is reverse engineering? We'll go through that, we'll see that, and what are the softwares, okay, and how we can perform reverse engineering over there. Okay, so what is reverse engineering? It is something which is we are reversing. Okay, it is really related to software. So we'll see that what is reverse engineering means what is RA? RA means reverse engineering. And why do we need reverse engineering? Scope and task of reverse engineering, different approaches. What the one can have a different kind of approaches or a different kind of way to approach into reverse engineering. What are the tools difference out available there into market and what is the finally conclusion? Okay. So can anyone already know what is reverse engineering? Something, anything? One line or two line, anything? Okay, no problem. If it is no. Okay. You have an unexpected case. See, in that we perform reverse engineering over different kinds of, we can perform application also. We can perform on software, web browser also, web applications also, reverse engineering. Okay. So it's totally depend that on which we are performing reverse engineering. And here is a one kind of scenario. If you finish the one Java course project using Java, your program runs okay, but by accidentally if you delete that Java file, okay. So what you will do with the so hard work you have created your Java file, but in the last moment if it is deleted, so you have to have backup of that, or if you know the reverse engineering, so you can get that back that files which you have created. Okay, so there are things like this in reverse engineering. Okay, what will happen if you have an unexpected case? If you finish one course of project using Java, it is that only. Solution is reverse engineering. So if you know the reverse engineering, then you will be happy in any scenario. If your data is deleted or data is somehow misplaced. So if you know how to perform reverse engineering, you can get back to that data. Okay. And what is reverse engineering? We'll see that reverse engineering encompasses any activity that is done to determine how the product works. Means if you have any application or a software and if it is working in certain manner and if you want to know how that actually what is the steps which is that a particular application is taking while running. Okay, so knowing about everything about that particular thing, and if you are performing that reverse thing, called as reverse engineering. Okay, to learn the idea and the technology behind that that were used in the developing that product. Okay, so which kind of technology, which language they have used to if there is any kind of software. So you will what you will see over there that what the language they have used, what the modules they have used while creating that particular application. Okay, and if it is mobile application, so even in that also you will come to know that what technology they have used or what is the language, PHP, Java, XML and all, what is the actually code written in which that application. Okay, so reverse engineering can be done at many levels. There are certain levels of reverse engineering. We'll see in further slides. Okay, reverse engineering generally belongs to software maintenance. Okay, so in general, see, I will tell you how what we are going to do. Okay, so in reverse engineering, it depends like if there is any what we will do in our practical that
if there is any paid application or a paid software, or if it is asking for a registration code. Okay, so what we will do that we'll bypass that code without paying even single rupees. Okay, so I have one application software you can say, and we'll perform reverse engineering on that. Okay guys, clear है मैंने जो बोला? Yes, sir. हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन कोड मांगेगा, जो कि मैं पेड करूंगा तो ही मुझे जब कोड मिलेगा तभी मैं जाके वहां पुट करके आई कैन यूज दैट एज अ प्रिविलेज यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, बट विदाउट पेइंग एनीथिंग मैं उसको जस्ट एक्टिवेशन कोड कुछ भी डाल के रैंडमली डाल के उसके अंदर जो भी उसकी पेड सर्विसेज उसको लेने की ट्राई करेंगे। ओके, सो दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, मीन्स दैट वो आपको अलाउड नहीं है, इवन दो आप उसके कोड में चेंजेस कर रहे हो, वो जिस कोड में लिखा है यू आर चेंजिंग दैट कोड इन ऑर्डर टू हैव दैट particular experience of privilege level. Okay, so you can, that is reverse engineering considered. So there are two type of reverse engineering, you can say forward engineering and reverse engineering. Okay, so what is forward engineering? So forward engineering, when you are performing the engineering in forward manner. Okay, waterfall model of software development, like waterfall flows in from up to down or in a certain manner from you can say like there are level of water flowing. So that is in that there is requirement analysis. Then there is design. Mean what is the requirement? If you are creating any software, there should be a requirement. Okay, and the design, how that particular application will look like. Okay, and everything will be prepared in a proper on paper way. Okay, with the help of different kinds of paid software also. And then the next process will be implementation, what the plan they have made, what the design they final. Okay, and what is the actual purpose of making that particular software or application. Okay, so they implement that idea into particular process and they will have a particular product. Okay, so as soon as they will got the product, what they will do, they will test that. Okay, they will test that how that product work in certain what you can say manner or in certain workload. Okay, so how that particular software is performing, it is testing by software testers. There are particular you can say team of software tester, they will be testing that software. Okay, and how it is maintenance of that, they will test everything. Okay, so it is you can say these are the steps, forward steps in software development. Okay, and what is forward engineering, or this is you can say the forward engineering for requirement design and the source code and testing maintenance. So first of all there should be a requirement that you have to have clear that what you are creating and what is the purpose you are creating. What is the purpose of your that software you are creating, what is the purpose, then design should be followed. And there should be a developer who will write the code. Like आप अगर से कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, इफ अगर से आप म्यूजिक म्यूजिक की कोई फोल्डर या फिर ड्राइव बनाना चाहते हो, म्यूजिक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो देयर शुड बी कोड written for that everything. Okay, there should be a coder who will write the source code. Then there would be a testing team who will test that particular software on different levels. Okay, and forward engineering versus reverse engineering. So you can say that forward engineering is like as I told you, and the reverse engineering is back of that. You can say the reverse of forward engineering. Okay, so you can say, see, in forward engineering we go from requirement design, source code, and testing. So, but in reverse engineering, first we perform the testing. Okay, so the product is ready. One there is application is ready. One software is ready. Now you have to perform the reverse engineering. Okay, so first of all, you will test that particular software with the different high-end tools. Okay, if there is high-end tools, you will test that tools that how actually it works, and then you will see that if there is any misbehavior from the application or the software, so you can
tell through the developer, he will fix it. Okay, and there is source code. Then there would be a team who will be looking into the source code which is already written by developer. Okay, so they will try to find anything which shouldn't be there, or if it is there, so because of that there could be harm with the application. So they will look for that if that kind of thing really exists. So they're gonna make a report of that and they're gonna release the patch that. So then they look into the design, whether design is properly or not, or the design should have any kind of what you can upgradation requirement. And finally they will see that the requirement for which the application was made, whether it is fulfilling uh, correctly or not. If it is not fulfilling, that there might have some issues, and they will reassemble it. Okay, is it clear that forward engineering and the reverse engineering? Yes guys, is it clear? Yes, yes. Okay, Yes. tell me honestly, any of you yet heard about social reverse engineering, or anything, something related to this? Okay, no problem. So there is concept of abstraction system. Okay, so in the reverse engineering abstraction and the forward engineering is the implementation. So there was an old system which is converted into new system, or new system can be again transferred into old system. So this is abstraction system. Why we need reverse engineering? So this is very needful question, you can say. Why we need reverse engineering? What is the important, and why that reverse engineering is the only solution? Okay, so recovery of the lost information. This is very important. Nowadays, as I already told you, information is more priceless than you can say actually currency. Okay, so if any information is you lost, so you can, I think it depends upon your information that how much you want, how much you will ready to pay. Okay, so information is really important. So if you lost your information, to recover that, social engineering is the only solution, you can say. There are other solution also, but social engineering is the most appropriate solution. Providing proper system documentation and assisting with maintenance. Okay, so if the product is ready, so there should be proper documentation while testing, or while performing reverse engineering, identification of side effects and anomalies. Okay, so if there is that product application or particular software is performing uh, assigning tasks, so there what could be the side effect of that? Okay, so that should be documented properly. Okay, whether it has any other effect which shouldn't be there, so then everything they document properly. Migration to other hardware software platform. Okay, like how the software is running over the different platform like software and hardware. Okay, if there is any dependency issue and all, if there is any other issue which is dependent on hardware or any other software, so they look for everything whether it is depending on system or any other software which shouldn't be there. Okay, facilitating software reuse. Okay, so every time they try to reuse. What are the benefit, difficulties, and scope of reverse engineering? So the earlier days, what there should be, law of software revolution. These are, I think, these are the books of reverse engineering, earlier days of reverse engineering, or this could be a method or a book of reverse engineering. Now we'll see the what are the benefit. Maintains cost saving. It is really cost saving, you can say. Okay, like see, if I have any software or application, if I don't have money to buy that premium version of that, then what I will do? I can perform reverse engineering, but it is not easy perform. It is, you can say, the very domain. Its domain is really different. Okay, so if you want to make a career into some out of the box, you can say domain, you can choose it.
Okay, so it's really away from the track. Okay, it is not hacking. Reverse engineering is really not hacking. It's a process of really understanding the backend technology of any software and how it is actually running. Maintenance cost saving is really cost saving, a quality improvement. So if there are many companies who perform a reverse engineering to maintain to improvement of the quality of their product. If they made any kind of product, it could be a physical product or virtual product. If we are talk about virtual product, then it could be like anything which is made with the help of technology. Okay, so that is virtual, you can say. So quality improvement could be the only reason, could be the one of the reason so that they are performing reverse engineering. Competitive advantages. So there are many companies who are really into competitive mode. So there could be advantages. Software reuse facilitation. Okay. Difficulties of reverse engineering. What are the different kinds of difficulties that one can face if he is entering into reverse engineering? So gap between problems and solution domain. Okay, so see in this, if you got any kind of problem, so there could be a gap because you have to troubleshoot that problem, and then you will eventually find arrives near to one of the solution ultimately. Okay, so you are thinking that this could be a solution, but eventually will come to that this is not a solution. Then again you have to process yourself into that thing to finding solution of that. Okay, so it's you can say there is a gap between problem and solution. If you got any problem, there could be a gap to find solution of that problem. Okay, gap between concrete and abstract. So there are abstract and concrete. So there should be a properly gap between concrete and abstract. That what should be abstract. Okay, and what is concrete? What is the ekdam basic level thing? Okay, so there should be a gap between coherency and distinction and hierarchical and association. So it's all it's all connected, related to how that particular software or product is performing. Okay, so there should be a like differential between hierarchical structure of that and association structure of that. Okay, so it's all depend upon that particular product. Program understanding, so there should be understanding of if it is any kind of program, so there should be a proper understanding. Okay, so there are many steps which takes place into reverse engineering. So it is one of them. Allow them. And what are the scopes and tasks of reverse engineering? So redocumentation and the document generation. So you can say every time you have to do the re-documentation, because when they are performing reverse engineering, so there could be a many things which need to be done again and again. Okay, so the re-documentation should could be there, or documentation generation. So yeah, every time you can say that you have to generate that documentation again and again. Okay, and recovery of design approaches and design. So what are the designs and how the design is really work, and is it suitable for that particular product or not? So they have to recover that. Details at any level of abstraction, identifying reusable component and component that need restructuring, recovering business rules. Okay, so if they have business and they made any product for that particular business, so they have to recover that. Understanding high level system description. Okay, so yeah, if the any kind of making the product like software application or web application, there should be a proper description of that. Okay, so they should have a proper knowledge, like the idea should be clear that what is the ultimate goal for that they are looking for that particular software, or you can say tools which need to be reversed.
discover or abstraction in large system, maintenance purpose you can say, and evolution purpose and re-engineering purpose. So these are, this could be the most three purpose of reverse engineering. Okay, and the level of abstraction, these are the levels you can say, and different approaches. What could be the different approaches while doing the reverse engineering? So the transmission from one representation to another at the same level. Okay, so so this is the level. First level is requirement and the second is design. Third was the source code and the behavior. Okay, so there could be a transmission from directly one level to different other level. Okay, so there should be there could be a gap of that environment in which they are working. Okay, so because of, and what are the different approaches? Design recovery, reverse engineering is there. In that, design recovery is there and reproduce all the information for understanding the system. Means they, if they produce any software or program, what is the proper backend technology on which that particular software or tool is working. They have to understand that. Okay, proper information should be there. What is the information of that? Redocumentation, if they got any changes into that, so they will redocumentate it and provide different view on the system, so that in that they ask to the team like what is the proper idea of that which the product they have made. Okay, there are phases. For first phase, reverse engineering, the first phase understanding the system, and the second phase is forward engineering. Okay, so first of all, they will understand what is the system and what are the requirement and the forward engineering, like they will be doing in development mode. Okay, like software development or any kind of tool development. Okay, and the what are the, these are the different approaches which we already read. Practical implementation of tool for reverse engineering. So there are many tools which can help to do reverse engineering. Okay, analysis tool for there, different kinds of browsers there which helps into perform uh, reverse engineering. Object server is there, and the task oriented tool. If we have different kinds of tasks, so depend upon that particular task, we can choose the tools according to our need. Okay, so I will, there is a tools for I have tools which I will tell to you. You know, I can share with you all. How to recover bytecode from class file, understand from the window with JDK, Java development case. So this is the file, this is the, you can say one kind of code or decompiler of Java. So if anyone know, if anyone have idea about Java, so he can read it and understand it. Okay, so this is the decoder or a decompiler, you can say, of Java. Okay, so this is the interface. Okay, when I will run the tool, so similar interface you will also able to see. So example of Java decompiler. Again, there is example, and there is two type of Java. Okay, so what is the system requirement? All platform, Windows and Linux. Okay, so there are some applications which require JDK and some application requires JRE. And for the development purpose, if you want to develop any kind of software tools and all everything, for that there is Java Development Kit, JDK. And if you are running the software which are made on Java, so you will require JRE, Java Runtime Environment. Okay, क्लियर है? जब आपको JDK का भी यूज करना है और JRE का भी यूज करना है, ये जस्ट जावा के Yes. वर्जन्स है जो जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर पाओगे. ओके, तो आप अगर से कोई, इफ यू आर रनिंग सॉफ्टवेयर विच इज made on Java, then you will be need that JRE. And if there is any software made, if you are developing with the help of Java, then you will be requiring JDK. Okay, and there are, do not believe it or something, three lines. Okay, so if you'll have understanding of Java, you can read and understand it. There is Java decompiler. Okay, so these are the conclusion. We'll see that reverse engineering a new research area. Yeah, it is a very new area. You can say it is not into
You can say it is not from hacking part. Okay, it is totally new part. आपको इसके अंदर बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो होती है उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी समझनी होती है, किस पे बना है वो लैंग्वेज समझना होता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने होते हैं कि हाउ in which manner that particular software or tool is performing while doing what we can say while doing that while using the application. So you have to go to reverse order among the software maintenance. Reverse engineering includes activity of understanding the system and recovery information from system. Okay, so if you lost your data, so you should know the how you can recover the particular information from system. And programmer understand is the most important. So you should know the programming language into this. If you want to switch into this reverse, what you can say reverse engineering, you should know the different kinds of programming language. Anybody know any programming language like Python, Java, HTML and all? Anyone know? Okay. Yes. Yes. Which one? SQL. Yeah, SQL. Okay, Python. great. Python Okay. and C basic. Okay, so if you know a basic thing or a few things, so be into that to learn that thing into advanced level. Okay. The program understanding is the most important in this, that what we can say reverse engineering. Subset of reverse engineering, there are so many subset area of reverse engineering. Discover the all abstraction is key issue. Okay. So these are the few references over here. Okay, so this is just an PPT. So now we'll see that what we have. So there are many tools which you can use for this reverse engineering tools. Okay, like see, there is a tool. This tool name is Power Archive. Okay, which is the paid tool. You can say the document authentication code is required for this. I will show you in further slide. Okay. Now, guys, do you know what is the mod APK? What are the mod APK? Yes, Have you used? Yes, sir. Okay, so which mod APK you have used? So this is my Android phone. Will download here over here mod APK. Okay. So from here we should download mod APK. Google. Chrome. Exactly. So that's what I'm asking. Which mod APK you have used? Any name for that? Sir, for games only I have used. Which one? Games. Okay, the mod games. Okay, fine, fine. So okay, so now we are on Google. Okay, so on Google we can search for mod APK. So I have one. Have you guys used the Sawan application? Anyone? Yes, yes, sir. sir. Okay, so as you know, the Sawan application is a paid tool. Okay, so what to download any song into that, you have to have that subscription of that. So there are many websites which provide the mod APK of that application. So we'll see that how whether we are able to download or not.
APK of uh, so Geo Savan is a mod unplug. ओके सो अभी मॉड एपीके तो हमको मिल जाएगा मॉड मीन्स मॉडिफाइड ओके बट उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंस होंगे जो कि पेड एप्लीकेशंस में मिलते हैं ओके अगर से आप if you go to download this Sajio Savan application from Play Store you will not get that feature which you will get here okay but the one problem is with this mod APK क्या होगा बता सकते हो सर वायरस भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इसके अंदर आपको ओके फोन के अंदर वायरस भी आ सकते हैं योर डेटा कुड बी स्टीलन ओके दिस कंपनी जो मॉडिफाई के बनाती है आपको जब वहां पे जब परमिशन आप अलाउ कर देते हो तो आपको पता नहीं ना वो ट्रस्टेड है कि अनट्रस्टेड है सो दे कैन लिटरली सी योर डेटा एंड दे कैन सेल योर डेटा ऑन द डार्क वेब ओके so what is dark web anyone know we'll see today also dark web that what are the dark web what is the dark web how you can access okay think we already has discussion but we'll see also today and whether it is started or not but I think it is not started yet we'll see on different website I just want to show you how that mod APK work I think but you already have idea that how mod APK work exactly so here are apps found for my geohack tools and yeah there are many tools Wi-Fi pass simulator okay so there are many modified tools so modified वो लोग बनाते कैसे how they are made modified with the help of the reverse engineering only okay so this was the emulator on that I was installing my Android applications okay so do you know what is emulator Yes, sir. सर प्लेटफॉर्म टू रन। exactly it is the Android environment which you can create into your PC and or into your window machine you can download your applications from Play Store with the help of emulator okay so like I have downloaded LinkedIn Spotify Anycall and Endicall what are these two applications I will tell you afterwards okay first we'll see that there is a mod APK of Truecaller also so have you used Truecaller mod APK anyone Yes, sir. so this is सर how it is actually work. Can you tell me? Because I have not used it. सर गोल्डन प्रीमियम Okay. विद अनलॉक So इन दैट। so उसके अंदर हम किसी भी का प्रोफाइल देख सकते हैं. Exactly. नो सर वो राइट्स नहीं दिए। Okay. सम राइट्स आर प्रिविलेज्ड Okay. एक्सेस इट। तो डिफरेंस क्या है फिर जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है फिर उसका गोल्डन वाला किया तो गोल्डन बैगेज आ जाता है सर। okay and there is indie call application which I told you into this I will tell you regarding this two application which is used for call spoofing okay and we'll see that how we can set up ng-rock and what are the different from hacking yes I told you reverse engineering is really different from hacking in hacking what we do we are just getting unauthorized access or compromising any system
Okay, or trying to get information which one normal user don't have to get rights to get that permission. Okay, but in reverse engineering we have everything, like we have tools और we have software. हम लोग वहां पे उसको क्रैक करके उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, which is paid tools, so we try to unpaid it. Okay, यहाँ पे आपको गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग चाहिए होता है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग किसी आपने बताया किसी ने कि आपको एनीवन पाइथन आता है। डज एनीबडी हैव लिसन ऑफ दैट असेंबली लैंग्वेज? किसी ने सुना व्हाट आर द असेंबली लैंग्वेज? यस गाइस। Like Python language is there, C, C++, Java language is there. There was a assembly language also. There is assembly language. किसी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फील्ड से है, कोई इलेक्ट्रॉनिक किया है इन बैकग्राउंड इनटू स्टडीज? क्योंकि आईसी और प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअली कोडिंग ऑन दैट, so you need to be know that assembly language to run to do coding on that. Okay, so what is the assembly language? In that there you can perform the different addition, subtraction, and these are the basic thing which you can perform. And there are some advanced method into assembly language also. Okay, अभी जैसे हमारे सिस्टम्स के अंदर लैपटॉप या मोबाइल फोन के अंदर सब जितने भी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस कौन कौन से आते हैं, जैसे इफ आई वेंट टू द इनटू मोबाइल शॉप और वहां पे मैंने जस्ट आई बाय न्यू मोबाइल फोन, so which are the applications which I will get by default? Could anyone tell me? Camera application will I get by default? File manager I'll get, Yes, sir. and Internet Explorer and all. But the application which need that hardware access, okay, if I have कुछ समथिंग विच आई कैन जिससे मैं म्यूजिक कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, दैट आई हैव कंट्रोल इनटू दैट जैक। एंड मुझे कैमरे का एक्सेस किससे मिलता है? कैमरे के एप्लीकेशन से। सो जहां पे मुझे वेन एवर आई एम गेटिंग दैट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर इन ओवर देयर, देयर इज असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड। ओके, एंड जो मुझे जस्ट वो रन टाइम के लिए रन कर रहा है, जिसपे मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, या फिर जिसको मुझे जस्ट एज अ हार्डवेयर का एक्सेस नहीं मिल रहा है, जैसे अभी ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर को हार्डवेयर का कुछ एक्सेस मांगेगा। डज इट नीड इट? No, no. So that kind of application could be from Java and different programming language like Python and all, but that couldn't be from assembly language. So that software only have made be from assembly language which require hardware access. Okay, like camera and all, and music player you can say that require hardware access because it is accessing that speaker. Okay. Yes, sir. And what we do into reverse engineering, we are creating a replica of that. Means what you can say clone for of that. If we have any software, I'll tell you, we'll do when we'll do practical, there is one application, will create replica of that which will be free to use. Okay. If some kind of taking place with the help of applications, so how we attack has taken place, that we do reverse engineering. Means if you have one application, like if some attack happens, if the attackers came and does some attack into that application, okay, so by doing reverse engineering we can come to know what was the actually way of hacking, or we can say what was the actually way of attack. Okay, so reverse engineering is really important. Okay, रिवर्स लुकअप इज देयर, लाइक रिवर्स थिंग इज देयर। आप लोग ने हैव यू सीन सीआईडी? वहां पे इफ देयर इज सम मिस्ट्री हैपन,
सो वहां पे एकदम लास्ट से वो लोग प्रीवियस तक कनेक्ट करते जाते हैं. सो अल्टीमेटली दे फाउंड मर्डर. ओके. तो दे डू रिवर्स इंजीनियरिंग ओवर देयर. कि अटैकर ने जो जो स्टेप्स लिए होंगे, उसको अल्टीमेटली दे आर अराइव्ड ऑन द फाइनल attacker position. So they will do reverse engineering from there. So to begin to catch the actual victim. Okay. An app can be mobile application, laptop application, and a web application. We can perform the reverse engineering on mobile application, laptop, and web application also. Like web application, yesterday we had a discussion on web applications. Like what are the web application with application which I'm using into website or web pages in web pages mode. What are the example could be like Swiggy, Zomato, and all these are the applications which are web applications. And what are the development part? If you are developing any kind of software and the vice versa of that is called as reverse engineering, you can say. The reverse engineering is a vice versa of development. It means you are developing any product, and in reverse engineering you have developed any product and you are actually analyzing that product from final stage to initial stage, and you are arriving to particular certain conclusion. Okay. So you have to have proper documentation while doing social engineering. Software reverse engineering. Okay, so there are how we can perform software reverse engineering. Software nothing but it is a piece of program. How we can make software by writing code. By writing code, we will make a program, and the with the help of different program, we'll eventually have the software. Okay, to do reverse engineering, anyone is programming is required. So it's very important to have programming knowledge if you really want to switch into social engineering. Okay. And yeah, you have to have that knowledge into reverse engineering or programming knowledge. And how programming knowledge is work, can anyone tell me what is the code and what is the function of this? Just see these 4 or 5 lines code and tell me what is the actually function of this. Anyone trying to read? So this could be a very simple example of reverse engineering. Okay. Like what is the actually reverse engineering? So we can see over here a user is there and user is putting input. Okay, so input value is assigned to A and the key is So if uh, one is equal to 10, then it will print success. exactly. So if the user input, so ultimately user का input क्या होगा जिसमें successful print आएगा? 3. Exactly, correct. Awesome. ओके. सो अभी मान लो यहाँ पे की मेरा वो बिटवीन 1 to 10 है. ओके, ये कोई की हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हो सकता है. ओके, बट द यूजर डजंट नो. उसने कुछ अमाउंट पेड किया, मैंने उसको की दे दिया कि वेन एवर यू आई विल आस्क टू यू हैव टू टेल मी दैट योर की इज 3. ओके. एंड इन फ्यूचर इफ यू फॉरगेट हिज की कि वो अपना की 3 जो था भूल गया. So यहाँ पे when it is asking, when that particular application is asking for key, if it is trying to enter that 5 or 6, then will it satisfy this result? No. Then only then what it will get? It will get invalid license. Okay. And when he will enter his correct key, like whatever what the key I told to him, 3. So then it will satisfy this result and he will get success message. Okay, so like this is the basic, you can say एकदम basic method on that. This is a premium application work. तो वहां पे जो आपको की मिलता है, जैसे आप लोग ने कुछ खरीदा, वहां पे आपको की मिलेगा. ओके, कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदा, उसका तुम्हें की मिला. ओके. तो जब तुम वो की वहां पे एंटर करते हो तो अल्टीमेटली उसके पास ऑलरेडी कुछ जनरेटेड की होती है.
तो उनसे वो कंपेयर करेगा या फिर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ही विल डू, कि अल्टीमेटली कि वहां पे तुम्हारा की फिट बैठना चाहिए, एंड इफ इट इज नॉट फिटिंग दैट मींस योर किटी द की व्हिच यू आर इंसर्टिंग दैट कुड बी रॉन्ग. Okay, so this is the step. Have you understand, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and yeah, let's begin with the example. अभी हम लोग देखते हैं कि एक पेड टूल को हम लोग अनपेड कैसे करते हैं, फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, फ्री में तो हम लोग यूज करने के लिए ऑलवेज रेडी टू यूज इन फ्री. एग्जैक्टली. Yes, sir. So I have one application called as Power Archive. So what वो application क्या काम करता है, वो पेड टूल से उसको हम we try to unpaid it. So yeah, so this is the application. What is this? Power Archiver. आप लोग ने आर्काइव अब इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया तो आर्काइव बनता है. सो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना. तो ये किसी ने वो यूज किया एक्सट्रैक्टर, कौन कौन सा यूज किया, 7-zip का यूज किया रहेगा, विनरार का यूज किया होगा, और एग्जैक्टली. सो ये भी उसी की तरह काम करता है, पावर आर्काइवर, जो आर्काइव बनाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो सबके लिए हेल्प करता है. बट it require input validation or not input validation, it require key to activate it. Okay, so I already have downloaded it. This is the link from where you can download. So I think control C, I will put over here link also. So if I will share to you all this, you'll be getting link. Okay, our archive. Okay, so abhi in case if I'm sharing this, you'll be getting link. So on this link you can download. Okay, so this should be in this. Yeah, so this is the tool which I already have downloaded and extracted it. Okay, so this is Power Archiver. Welcome to Power Archiver. ये 2004 का है, 9.26 वर्जन है. Next. So where is the actually it is installing? It is installing in C drive program files and with the name of Power Archiver. Exactly, because this path we need in future. Okay, मुझे अभी जरूरत पड़ेगा अभी ये path का. Okay, so जो guys remember करो. Okay, तो अभी यहाँ पे टूल का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, पावर आर्काइवर. यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, विल इंस्टॉल इट, फिनिश. ओके, सो अभी देखो जैसे ही मैंने इसे चालू किया, व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग फॉर registration code. Enter registration code. I will have to enter any my name like Akash. And what are the my code? Let's consider I have random code. And if I will put OK, incorrect registration information, please try entering code that you have received. Okay, जब मैं इसे अमाउंट पे करूंगा तो ये मुझे एक कोड सेंड करेगा मेल पे. So then I will have to enter that code which I got into mail. So then it will give me that login successfully or that privilege level. Okay, have you understood how it will work? Yes, So sir. yeah, so I had to register it or have to buy it from here. So if I will cut this, I have to buy it, buy Power Archiver now, buy now. Yeah, so we can buy from here. कितना है इसका, 22.95, नियरली $33 है ना. तो ये एनुअली है कि मंथली है. $33 मीन्स कितना हो गया, 33 USD इन रुपीस कितना हो गया, बाप रे, 2600. ओके,
हाँ, सो अभी एक मेथड देखेंगे जिससे हमारे 2600 बच जाएंगे. So we'll quit it and yeah. So there are different tools with the help of that we can perform reverse engineering. So you can see there is ODBG 110 immunity debugger, ODGBG 10, and this is the snapshot. Okay, not it is snapshot. There is tools is power archiver. Notice the power archiver. Will quit it and yeah, it is power archiver zip file. It is okay. And there is a tools only debug. This is the tools which we will using to for reverse engineering. Okay, so yeah, you can see only dbg. Can you guys? So when I will share to you all, you can see, you have to see this and you have to run this as a run as administrator. Okay, are you getting guys what we are doing? Yes, sir. Yeah, so this is the tool with the help of that. वो जो पावर archiver paid tool था ना जिसका 2600 मांग रहा था. So we'll make that tools to use free for all of you. So मैं free करके सबको लिंक शेयर कर दूंगा, सब enjoy करना. Okay. So for this, you have to go to file option and you have to press open. And हमारा कहाँ पे इंस्टॉल था, उसका पाथ क्या था एग्जैक्टली कौन बताएगा जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था? Program x86. एग्जैक्टली उसी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में था ना. प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पावर आर्काइवर नाम से रहेगा. ओके, तो ये क्लिक करो और यहाँ पे ओपन कर दो. ओके, एंड ओपन. सो यहाँ पे तुमको एक यू विल गेट द फीलिंग ऑफ हैकर वाली. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है. तो यहाँ पे आप जब व्हेन यू डू दैट, जब भी हम लोग इसको रन करते हैं हम लोग को मैसेज क्या मिलता है. अगर से मैं गलत कोड डालता हूँ तो मैसेज मुझे क्या मिलता है. यहाँ पे रेंडमली मैं कुछ तो डाला तो मुझे मैसेज क्या मिलता है, मैसेज को मुझे पढ़ना है. इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन. ओके, मतलब मुझे स्ट्रिंग में मैसेज मिल रहा है. एग्जैक्टली. सो व्हाट वी विल डू दैट. तो यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा एंड सर्च फॉर ऑल रिफर्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग. तो मुझे जो भी आई विल गेट एवरीथिंग विल बी इन टेक्स्ट स्ट्रिंग ओनली. सो सी यू कैन सी देयर विल बी स्मॉल विंडो ओपनिंग. यहाँ पे स्मॉल विंडो ओपन होगा. जस्ट यू हैव टू मैक्सिमाइज इट एंड यू हैव टू सी. यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइन दिखेगा. ये इतना सारा लाइन है कि इवन यू बहुत ज्यादा लाइन है. देख रहे हो कितना लाइन है. और ये इसी दिस इज लाइन नेम जो आपको एकदम लेफ्ट पैनल में दिख रहा है. वो लाइन का नेम्स वगैरह है. ओके, तो यहाँ पे आपको सी यहाँ पे 40 1 2 6 4 41 2 84. सो आई थिंक इट इज सीरियल वाइज भी नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है. ओके, या बट हो भी सकता है सीरियल वाइज. बट मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है. यहाँ पे आपको जस्ट यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन मैसेज प्रिंट. तो यहाँ पे आपको जस्ट मैसेज देखने का जो मैसेज आपको आता है स्ट्रिंग में. कहाँ पे है. यहाँ पे तुम्हें वो मैसेज सर्च करना पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्चुअली दैट एरर यू आर गेटिंग. ओके, सो यहाँ पे जस्ट आपको लाइन बाय लाइन भी सर्च करना पड़ सकता है. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा ना आई विल यूज द फॉलोइंग ऑप्शन. सो वहां पे मुझे दैट एरर आना चाहिए कि इनपुट रजिस्ट्रेशन कोड एरर करके कुछ तो आना चाहिए. ओके, सो विल सी दैट बट आई ऑलरेडी नो कि वो कहाँ पे है. आई थिंक वो 65 पे है. आपको बिगिनिंग में नंबर दिख रहे 006. तो 0065 पे है वो. 651. या यहाँ पे मैंने उसका नंबर लिखा एक उसके नोटपैड में. विल सी फ्रॉम देयर इंस्टेड ऑफ
वहां पे कि अपना, so this is the link and नंबर कितना है 0651839. ओके 0651839. सो विल सी ऑन दैट लाइन कि हमारे पास किधर है 065 1 a. सो हियर इट इज 1. a मीन्स ऊपर होगा 0 a 65 1 a 065 1 a 39. Can you see guys this line? Yes, sir. Yes, sir. या क्लियर विजिबल है ना कि मतलब नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मॉल स्मॉल्स में लिखे हैं. सो यहाँ पे मैसेज क्या लिख के आ रहा है, कोई रीड मारेगा? एनीवन जस्ट रीड. ये स्ट्रिंग में क्या लिखा है, इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, प्लीज ट्राई एंटरिंग द कोड यू हैव रिसीव्ड अगेन. सो ये सिमिलर है जो हम लोग ने वहां पे रीड किया था गलत कोड डालने के बाद. Yes, sir. Yes, एग्जैक्टली sir. तो सारा गेम इधर ही है. अभी जो अपने को करना है इधर ही चेंजेस करना है. ओके तो यहाँ पे मुझे ये लाइन पे आना है और मुझे जस्ट ऊपर थोड़ा देखना है. यहाँ पे मुझे आ, कुछ LA करके कुछ दिखना चाहिए और JMP करके कुछ दिखना चाहिए. यहाँ पे एक लाइन होती है, आई एम नॉट गेटिंग दैट, विल सी प्रॉपरली. वो लाइन जस्ट मिलनी चाहिए बस. ओके दैट वो लाइन की बिगनिंग ना ZNP से होगी समथिंग. एंड तो वो लाइन पे जाके आई हैव टू डू चेंजेस ऑन दैट लाइन where it is actually registration code, edit label, password, login. इतना ऊपर नहीं है, 10-15 लाइन के ही ऊपर होगा इसके. 10-15 लाइन के ऊपर ही जस्ट वो होगा. ओके वापस से ट्राई करते हैं एक बार. इसको मैं कट करता हूँ जस्ट एंड विल सी दैट कि एक्चुअली प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है क्या वो. नहीं तो मैंने ऑलरेडी शायद किया होगा इसकी वजह से फिर नहीं दिख रहा हो सकता है. अभी हम लोग सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव वेयर इट इज, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाके पावर आर्काइव जो है उसके अंदर देखते हैं. या सो पावर ARC. ओके सो मुझे यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है OLEDB के अंदर. ओके पावर ARC वाला मुझे जस्ट हैव टू सेलेक्ट. So again we'll go to into this and we'll start that OLEDBG. Okay, our tool which we are using for reverse engineering. Where it is, see this is the tool OLEDBG. You have to run it as administrator. So that's why this is error is there. You have to run as administrator. Okay, so you'll be getting software engineering attack on demand. Doesn't it please try specific valid path? Okay, we'll see that कि ये इशू क्या है. यहाँ पे फर्स्ट ओपन करेंगे और पावर, यहाँ पे विल ओपन इट और मुझे जस्ट आई विल यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करके सर्च फॉर टेक्स्ट स्ट्रिंग. ओके सो वापस से मैं वो लाइन पे ट्राई करूंगा जाने का 65 1 a 39.
So this is the line, and where it is. Okay, guys, let me see where it is actually there. I will find this number where जहाँ पे मुझे changes करना है इसके. Okay, just give me a minute. We'll see that. Uh, तो we'll see वहाँ पे लाइन कौन सा जिसके ऊपर मुझे चेंजेस करना है, वो लाइन नंबर मुझे देखना है. Okay, so just 651839 जो ऑलरेडी मेरा नंबर था, जस्ट मुझे चेंजेस जो करना है उसके ऊपर ही करना है कहीं पे तो. सो 6519 सी ए लाइन पे करना है. 6519 सी ए. Sir, your screen चलो is not स्क्रीन नहीं visible. दिख रही है. 006519 सी ए. Sir, your screen is Okay, not visible. we'll see that कि वहां पे है क्या. Which is the line number 6519 सी ए. 65 13 652419 where it is. तो आई थिंक ये ना प्रॉब्लम इसके साथ हुआ है कि मैंने ऑलरेडी इसको क्रैक कर लिया था. Okay, so that's why it might be giving this kind of issue. So what we will do is that we'll remove that thing again. जो मैंने डाउन अभी इंस्टॉल किया, we'll remove that. कहाँ पे इंस्टॉल किया मैंने? सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाके पावर आर्काइवर था ना, तो we'll remove it. We'll delete permanently. Okay, and OLEDBG also will remove. We'll see that OLEDBG is installed, then we'll remove that. Okay, so it is not installed. Okay, no problem. Then again we'll try to install that. पावर आर्काइवर को गाइस मैं वापस से इंस्टॉल कर रहा हूँ एक बार. लेट्स सी, देखते हैं. और वो पाथ पे इंस्टॉल करने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कहीं और कर लो. ब्राउज करके ना मैं पेन ड्राइव में ही ट्राई करता हूँ करने का. इनटू सर्वर सिक्योरिटी यहीं पे कर लेता हूँ. ओके, तो लेट्स सी. ओके, कहीं और पाथ पे कर लेता हूँ.
Okay, finish. So now I will run OLEDBG. Let's see. This error, I think because of this error we are getting this, no? So we'll do one thing, that we'll again extract OLEDBG if we have, think I have, और अगर से नहीं भी होगा तो एक काम करेंगे, टूल एक बार वापस से ट्राई करेंगे, अगर से नहीं हुआ तो इन केस हम लोग उससे इसको एक काम करता हूँ, मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वापस से, we'll again extract it, extract here. Okay, so again I have extracted. So already which I got, I will open it. No, you just you have to run as administrator. Run as administrator. ओके अभी जाके वहां पे जहाँ पे इंस्टॉल किया था उसका पाथ सेलेक्ट करना। सो कहाँ पे इंस्टॉल किया था मैंने, उस डी ड्राइव में, यहाँ पे एक फोल्डर है साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे मैंने पावर आर्काइव के अंदर पावर ए आर सी, ये आपको ये फाइल सेलेक्ट करनी है। ओके यहाँ पे जब आप ओपन करोगे ना, सो यहाँ पे आपको दिख के आ जाएगा, ये स्क्रीन में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ तो ऑल यू कैन सी प्रॉपरली। आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके वो जो मैसेज प्रिंट होता था, जस्ट यू हैव टू सी दैट, क्या था वहां पे, सर्च फॉर रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो मुझे विंडो खुल के आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग मुझे दिखेगा। तो मुझे 65 1 ए 39 वो लाइन पे सेम वापस से जाना। सो हाउ आई विल गो, 0 A 65 1 A 39, तो 65 1 A 39, so this is the line. Okay. 65 1 A 39. So here. So there is a problem with this, we can say power ARC only, I think, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी 2 3 बार क्रैक कर लिया है। सो अगेन मुझे वो लाइन नहीं दिख रही है। ओके सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसको इसको जस्ट मैं रिमूव कर दूंगा परमानेंटली, और इसको मैं जस्ट रिमूव करता हूँ। Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, remove error, चलो no problem, we'll see. We'll again download with that website. Okay, this was the website of Power Archive. We'll download it again. So see guys, you can see I'm again taking it from the beginning, like I'm downloading that Power Archive tool again, and we'll see this tool into OLEDBG. Okay, so it has downloaded. I'm opening it. Okay, so you have to just install it. Where it is installing in D drive or no? Again, I will start in C drive only. I will do program files. Okay, so here यहीं पे इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में करते हैं। ओके नेक्स्ट 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 install. So we'll quit this and we'll, well, where is our OLEDBG? Into cybersecurity and tools के अंदर यहाँ पे ना, so इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ।
सो लेट्स सी कि इस बार अगर से नहीं आया फिर कुछ तो और इशू हो सकता है, समथिंग टेक्निकल इशू, बट लेट्स सी इस बार होप सो हो जाएगा। ओके, सो इन सी ड्राइव पावर आर्काइवर प्रोग्राम फाइल्स में मुझे जाना है, उसके बाद पावर आर्काइवर में जाना है, फिर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, पावर यार ये पर्टिकुलर टूल मुझे सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे जस्ट ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा। ओके, देन मुझे वापस से वही स्ट्रिंग वाला ही करना है कि जस्ट मैं इसको राइट क्लिक करके सर्च फॉर रिफर्ड स्ट्रिंग कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रिंग सर्च करनी है वही सेम। सो विल सी इस बार मिल रहा है क्या, 065 65 1A 39 65 1। So this is the string. Okay guys, so अभी देखो मुझे just I cannot able to find it. Okay, so there might be some tool issue might be. Okay, everything I'm doing properly. अगर से आप लोग भी स्टेप करते हो ना यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। Okay, so just मैंने एक while doing practice I also made one video. So you can see there is a मैं जब परफॉर्म कर रहा था so मैंने जस्ट उसको बना भी लिया था। So you can see over here, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन दिखेगा प्लीज एंटर योर नेम रजिस्ट्रेशन कोड, कितना लाइन नंबर है, इनकरेक्ट। तो 65 1 39 आपको जस्ट उसके कितना ऊपर है, यहाँ पे जस्ट आपको ये लाइन फाइंड करना है, इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन, जो मुझे वहां पे मैसेज पे लिख के आता है। देन आफ्टर दिस yeah, so this is that line only, BE 441B 6500, is it that? नो, सो वो कुछ और ही है आई थिंक। सर्च फॉर टेक्स्ट स्ट्रिंग, हेलो गाइस, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हेलो,
Hello. Sir, you are Yes, audible Am I to us. audible to you all? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello guys, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. sir. Okay, so I got the problem. There was some issue with this application. I was not clicking on somewhere. So see, you have to see on this line incorrect registration. Okay, so you have to select this line and you have to look upwards to test this al.al line. Okay, so उसके नीचे आपको ZNG दिख रहा है, jump not zero. Okay, so ये लाइन को आपको एडिट करना है. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लाइन. ओके, एंड यहाँ पे आपको जहाँ पे ZNZ लिखा, ZNZ लिखा, यहाँ पे आपको इसको JMP कर देना है. ओके, मीन्स जंप नॉट जीरो को आपको जंप कर देना है और आपको जस्ट वन टाइम असेंबल प्रेस करना है. ओके, जैसे आप एक करोगे इसको आप कैंसिल करके राइट क्लिक करके आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सेव इट. ओके, तो यहाँ पे आपको कहीं पे ऑप्शन दिखेगा कोड कॉपी, सो ऑल मॉडिफिकेशन आई विल डू, मीन्स एवरीथिंग एंड कॉपी ऑल आई विल डू. ओके, तो यहाँ पे आपको एक नया विंडो खुल के आएगा. जस्ट आपको इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव फाइल करना है सेम प्लेस पे, कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, मतलब विद डिफरेंट नेम. आपको नाम क्या देना होगा इस बार, करेक्ट वाला. सो अंडरस्कोर करेक्ट आप दे सकते हो. तो ये मेरा करेक्ट वाला है. ओके, सो ये मैंने क्रैक वाला बनाया है. सेम चीज अभी जब भी आप जाओगे यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर, सो इनटू प्रोग्राम फाइल्स एंड कहाँ पे था मेरा, पावर आर्काइव के अंदर. सो ये जो था मेरा यहाँ पे पावर आर्काइव, सो सी दिस इज माय पावर आर्काइव जो कि मेरा पेड टूल था, और ये मेरा क्रैक वाला है जो मैंने अभी बनाया जस्ट. सो ये पेड वाले के अंदर पहले कंपेयर करते, इसके अंदर मुझे कोड मांग रहा था जहां पे मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा, and if I will put anything registration code, it will give me that incorrect registration information. So what we will do, we'll run that thing which we have made. Crack wala, we'll double click on this and we'll see that यहाँ पे आपको नया विंडो खुल के आएगा. आपको इंटर रजिस्ट्रेशन कोड पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है. सो जस्ट मैं जब भी अपना नाम डालूंगा आकाश, और मैं कोड कुछ भी जस्ट इवन मैं अपना नाम भी डाल दूंगा ना और ओके करूंगा, सो यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, थैंक यू फॉर परचेसिंग पावर आर्काइव. मीन्स जस्ट मैं उसके बैकग्राउंड की जो भी कोडिंग थी उसके अंदर जस्ट थोड़े से चेंजेस किया, माइन्यूट चेंजेस, एंड इट इज शोइंग मी दैट आई एम परचेसिंग दिस, आई हैव परचेजेस. ओके, मैंने ऑलरेडी इसको परचेस कर लिया, ऐसे ही बता रहा है. ओके, सो उसके जस्ट मैंने बैकएंड की टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर चेंजेस किए. ओके गाइस, Yes, sir. तो लाइक दिस रिवर्स इंजीनियरिंग हैपन. जो भी पेड टूल्स होते हैं, you can reverse engineer can make it able to enter into that particular software without actually purchasing it. Okay, you can do just make changes into backend technology or any some if programming language. So have you understand or should I show it again guys? Just tell me. Again. See, okay, see I will show you again properly. See, this is the correct wala which I will delete over here. See, I'm deleting. Okay, so I have deleted it. So what we will do, so as we know, when we are when we are watching that, it is asking me what it is asking me. It is asking me for a code. So we'll see that. See, when you will press to this, it will आपको यहाँ पे कोड मांगेगा. जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, कोई एक नाम बताओ, यहाँ पे आपका नाम डाल देते हैं किसी का, जल्दी कम ऑन. राहुल. ओके, सो राहुल, और मैंने रजिस्ट्रेशन कोड में कुछ तो एक नंबर डाल दिया. हाँ, सो जब भी मैं इंटर करूंगा तो नहीं लेगा.
बोलेगा कि दिस इज इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, सो व्हाट वी विल डू इज, यही सेम इंफॉर्मेशन मैं बाद में डालूंगा, सो ले लेगा, क्योंकि उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी में अब वी आर मेकिंग गोइंग टू मेक इट चेंजेस। सो ओली डीबग को आपको बंद करना है। ओके, जस्ट आपको वापस से टूल बॉक्स में आपका जाना है, जहां पे आपका सारा टूल इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे आपको ओली डीबीजी को क्या करना है, टेल मी क्या करना है गाइस, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको क्या करना है, कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप, फाइल पे जाना है, फाइल ओपन, ओपन, एंड क्या सेलेक्ट करना है, वो टूल वो आपको सेलेक्ट फाइल, करना है जहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल था। तो ये इस इंस्टॉल पावर ARC याद रखना, यू हैव टू सेलेक्ट दिस, यू हैव टू ओपन इट। यहाँ पे आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आपको कौन सी लाइन सर्च करनी है, 065 1 A 39 समथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको पहले स्ट्रिंग मोड में लाना है, सो सर्च फॉर दिस टेक्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको जो विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको वो लाइन सर्च करनी है 65 वाली। सो अगर से आपको नंबर नहीं पता, आप कोई और टूल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, सो देन यू हैव टू लुक मैनुअली ईच ऑफ द लाइन, आपको सोचो एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे आपको मुझे वो लाइन देखनी है 65 1 A समथिंग 39। सी दिस इज द लाइन, ये मुझे मैसेज प्रिंट करके आता है बार बार, करेक्ट। तो व्हाट वी विल डू इज दैट, यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक या फिर डबल क्लिक, एक बार क्लिक करूंगा, एक विंडो खुल के आएगा। सो यहाँ पे ये मुझे दिखा। तो यहाँ पे मुझको कुछ कितना लाइन ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब मुझे 25 to 30 लाइन ऊपर देखना है, test.al लिखा होगा, करेक्ट। सो उसके नीचे मुझे कहाँ चेंजेस करना है, एनीवन, ZN Z को, JN Z को, और मुझे इसको क्या करना है, JMP, JMP. एग्जैक्टली जंप नो जीरो को मुझे जंप करना है। इट मीन्स ये क्या होता है पता है ना, जैसे जंप नो जीरो, जब भी जीरो नहीं होगा वो जंप नहीं करेगा। तो मैं उसको जंप कर दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली। कोई अगर से असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि वहां पे जब भी जीरो नहीं आएगा, जंप नो जीरो मीन्स जीरो नहीं होगा तो जंप करेगा, अनटिल अनलेस जीरो रहेगा तो जंप नहीं करेगा। ओके, मतलब ये सारे इसके नीचे के जो 15 20 से 25 कोड है, ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, जब तक जीरो नहीं आएगा। सो हम मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इफ इट इज कमिंग जीरो और नॉट, यू हैव टू चेंज इट, वो जंप करेगा ही करेगा। तो डबल क्लिक करना है और इसको JMP कर देना है, एंड असेंबल, एंड व्हाट यू हैव टू डू, अगेन असेंबल के बाद इसको जस्ट आपको कस कट करना है। देन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी टू एग्जीक्यूटेबल ऑल मॉडिफिकेशन करना है, कॉपी ऑल करना है। अगेन ये जो विंडो आएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इसको सेव फाइल कर देना है। ओके, ये किस नाम से सेव करना है, क्रैक वाला, क्रैक। ओके, यहाँ पे सेव करना है। ओके, अगेन आपको क्रैक वाला सेव होगा कहाँ पे, सी ड्राइव में जाके सेव हुआ है। सो यू हैव टू गो टू सी ड्राइव, वेयर इट इज हियर। तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और पावर आर्काइव में जाना है, एंड अगेन यू विल सी ओवर हियर पावर आर्काइव, करेक्ट, कैन यू सी, या, सो यू हैव टू डबल Yes. क्लिक ऑन yes, दिस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड पे क्लिक करो, मैंने नाम किसका डाला था, राहुल ना, राहुल। यहाँ पे उसका कोड डाल देते हैं, राहुल कोड भी मैं डाल सकता हूँ। ओके, ये, और यहाँ पे जब मैं ओके करूंगा, तो मुझे आएगा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, थैंक यू फॉर परचेसिंग पावर आर्काइव, मींस राहुल हैज परचेज दिस। ओके, एंड इफ यू आल्सो वांट टू परचेस, कॉन्टेक्ट टू राहुल। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पावर आर्काइव खुल के आया, ये मेरा पेड वाला है। यहाँ पे मुझे कहीं पे मेरा इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा कि मैंने क्या वो सब डाल के, यूजर नेम या फिर क्या कोड डाल के लॉगिन किया है। कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर हिस्ट्री, इंस्टॉलेशन, डिफॉल्ट, स्किन, हेल्प,
brief tutorial, entering registration code, ordering information यहाँ पे किधर होगा? एटलीस्ट नेम, वो सब पर डिटेल्स दिखना चाहिए कि मैंने क्या क्या डिटेल्स एंटर करके लॉग इन किया है। इंटरनल व्यू, ओके, कहीं तो होगा, इधर ही है। ओके, या फिर ऑप्शंस में हेल्प में जाके लाइसेंस एग्रीमेंट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है। ओके, बट या अगर से मैं इतना सब पे देख पा रहा हूँ, इसका मतलब वो मेरा हो चुका है परचेस। ओके, जहाँ पे अभी विंटर पे उसका ऑनलाइन कितना था चार्जेस? कुछ टू तो थाउजेंड टू सिक्स हंड्रेड 2630 एग्जैक्टली, बट यहाँ पे हम लोग ने उसको विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल रुपीज उसको क्रैक कर लिया। ओके, सो दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग सिंपली। ओके, जो मॉड ईपी के बनते हैं, जो आप लोग यूज करते हो, व्हाट व्हाट दे डू, वो वहां पे उसको क्रैक करके उसके अंदर कुछ एपीके, कुछ मैलिशियस फाइल भी बाइंड करके वो रिलीज कर देते हैं, और and we download that without even thinking of that. Okay, so इसीलिए बोलते हैं अगर से आपके पास if you have primary phone, you don't have to use that kind of mod APK into your primary phone. So you have to keep, if you want to use that all kind of mod APK, you should have that virtual machine or emulator. You have to use emulator while using mod APK. Okay, because nothing will happen to your system or a mobile phone if you're using that mod APK from emulator. Okay, so your personal data will be safe. And if you are using with your mobile phone, and even though if you are if you are keeping your personal photos and Instagram, Facebook, or any kind of personal messages, so that could be stolen. Okay, so that could be seen by anyone. So if you don't want that to be seen by any third person, so it's a suggestion that you shouldn't use into your primary phone. Okay, if you have that kind of data which is so much confidential. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. And where it is high, this is the website which is, this is one kind of CTF only, which is you can consider as a game. So this is a machine name, and this is the language on which this machine is there. And this is one kind of CTF. Do you know CTF? Capture the flag. It is one kind of game. So where you can test your skill and solve different kinds of lab. Okay. So eventually you will be learning to solve any kind of lab, and you will have that practice of solving things. Okay. So even in future, if you are going into reverse engineering, so you can use this kind of platforms to enhance your skills. And what is this guy? This is temporary mail. I think all of you might be already knowing this is temporary mails. Exactly. यहाँ पे हम लोग Yes, इसको sir. लॉगिन करने के लिए Yes, यूज sir. करते हैं। सो यहाँ पे मैंने टेम्पररी मेल्स का ही यूज करके लॉगिन किया था। ओके, एंड I think I have one tool also to show you all the seeker. Let's see. बाकी पहले के जो टूल्स थे वो किसी ने ट्राई किया? यस, और हाँ, ये नहीं बताया था ना मैंने कि वो टूल्स मैंने ये सारे किसके लिए किए हैं इंस्टॉल। These are the two different applications to do call spoofing. What is call spoofing? Can anyone tell me? Like call. No? It means you are calling anyone on the behalf of other person. Okay, the number which you will use to call, which will be not your number, it could be of your friend's number or any n number, or you can see any random number. Okay, if you are calling to your friend or your anyone,
So the number which you have called, that would be any other number or foreign number. Okay, so that is call spoofing when you are calling someone with the different with the when person A is calling to person B with the help of number person C. Okay, so it is that only. So it's very simple. Not we don't have to make it complicated. This is the application. I think ये चल क्यों नहीं रहा है इसके अंदर? इसका ना ओरिएंटेशन का इशू है, इसके लिए बंद चालू हो रहा है. इंडी कॉल इन दिस, देखते हैं ये काम कर रहा है क्या. अगर से नहीं करेगा तो देखते हैं फिर कुछ और. यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन फेलियर का कुछ दिखा रहा है. ओके, सो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक नंबर रैंडम नंबर लगाने का. ओके, सो इसमें थोड़ा इशू है. ओके, एप्लीकेशंस में, बट आप पे ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट. ओके, बाकी दिस आपके फोन में ये वर्क करेगा. एनी कॉल जो है ना, ये वर्क करेगा डेफिनेटली. ओके, सो कैन एनीवन डाउनलोड इट राइट नाउ? प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा. यस गाइस, एनीवन डाउनलोडिंग? Yes, sir. बट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपको ना वो एड्स आते. यू हैव टू सी दैट एड. सो वहां पे आपके फिर पॉइंट बढ़ेंगे. सो देन यू कैन यूज दोस पॉइंट. सो आप यू कैन कॉल टू एनीवन. ओके, you download it. Yes, sir. Okay, so आप properly उसके अंदर सब करो, entering your details and try to log in, try to call anyone with the number of your, just any random number 1 2 3 4 5. Or there is one more tool which I will tell you all. Should I show you one thing? There is, I have one machine of Metasploit. Should I show you, or should I show you this seeker tool, which is location tracing tool? Seeker tool. Okay. So this is my, as you know, this is my Kali machine. Okay, so Kali machine already सबने किया रहेगा ना? Exactly. Yes, sir. So are you using it? Okay. So this, see this. So what? How you can? How I will download Seeker into my Kali machine? Can anyone tell me? GitHub. GitHub. I have to go to code. Copy this code. I have to go to machine. Switch to root user, and what command I will use? Git clone. Exactly. Git clone, and यहाँ पे I will paste. यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. ओके, एंड द स्टेप्स मुझे कौन सा फॉलो करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए? जो यहाँ पे लिखा होगा. कहाँ पे लिखा रहता है? यहाँ पे यू विल सी फाइंड ओवर हियर ओनली. यहाँ पे जब भी जो गिटहब के पेज से आपने डाउनलोड किया, वहां पे आप जब नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सी, दिस आर द फर्स्ट स्टेप. ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू सीकर ड्राइव. CD. तो यहाँ पे आपको सीकर दिख रहा होगा. सीडी सीकर, वहां पे गए, एलएस किया. अभी वहां पे क्या करना है, ये कमांड से हम लोग क्या करते हैं गाइस? कैन एनीवन टेल मी? सीएच मोड से इससे हम लोग परमिशन परमिशन. ग्रांट करते. Grant permission. एग्जैक्टली. So we'll give permission to this.
This is script. This is script. So we'll give to uh permission of execution. Okay, तो cs mod we can even give 777x permission. So क्या होगा इससे पता है, यहाँ पे जितने हैं सबको एग्जीक्यूट का परमिशन मिल जाएगा. So including this that script also. So ये स्क्रिप्ट को मैं रन कैसे करूंगा, डॉट install.sh. तो यहाँ पे जो भी उसके डिपेंडेंसीज रिक्वायर रहेगी वो सारे डाउनलोड हो जाएगी, जो इसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे डाउनलोड हो जाएगी. It is downloading dependency, so it require Python 3 because cycle tool is made on what you can say seeker. Seeker tool is made on Python, so you will need to have Python into your system. Okay. So it is downloading. I think it is installing PIP and PHP request. And then आपको क्या देखना होगा, आपको रन करने के लिए आपने ये रन किया, उसके बाद लॉन्च करने के लिए क्या करना होगा, ये आपने कर लिया, इसका आप हेल्प पेज इससे देख सकते हो. और यूज करने के लिए सीधा python 3 seeker.py आपको करना होगा. ओके. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मुझे मान लो नियर बाय का कुछ देखना है. सो मैं जस्ट 0 प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और पीएचपी सर्वर मेरा स्टार्ट होगा. तो वेटिंग फॉर क्लाइंट. सो 8080 पे काम कर रहा है ना, तो मैं जस्ट ब्राउजर में जाऊंगा. तो आई विल गो टू ब्राउजर. तो दिस इज द ब्राउजर और 8080 पे काम कर रहा है, तो मैं ब्राउजर में क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट कोलन 8080. Okay, so there is issue of failed. तो यहाँ पे भी विल गो टू न्यू टैब. यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरफॉक्स. यहाँ पे ट्राई करते हैं फायरफॉक्स लोकल होस्ट कोलन 8080. ओके, सो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा उसका सेशन, ये शायद ऑलरेडी ओपन है, दैट्स व्हाई. क्लोज ऑल टैब विल डू. एंड यहाँ से वापस से स्विच मारेंगे मेरी दूसरी कंसोल की मशीन, यहाँ पे मशीन पे, और वही सेम चीज लिखेंगे फायरफॉक्स या फिर 127.0.0 अगेन 1. ओके, कोलन 8080. See, again it is showing me issue with this. So यहाँ पे काम करते हैं, ng rock का ट्राई करते हैं यूज करना. ओके. यहाँ पे अगर से विल ट्राई टू यूज ng rock, सो क्लोज करते हैं. सो ng rock अभी डाउनलोड नहीं है मेरे सिस्टम में. If I will download that, it's gonna take time. We'll do Control C, clear, and what the other tools which I have, Docker file, seeker.py, install.sh, limerate, rabbit scan, install T-bomb. I think T-bomb मैंने बताया था ना, T-bomb या फिर Wi-Fi fisher, Jet fisher.
Yes, sir. Yes, sir. जेड फिशर ऑलरेडी आई थिंक बताया था. Yes, और sir. there are many other tools which we can use. अभी कितना टाइम है? We have time. 10 minutes we have. Should we do exploit any machine? There I have one machine. आपके पास जैसे मान लो लिनक्स की मशीन है which is outdated. So you can use that machine or you can exploit it and you can have the remote access of that machine. Should we use that? Should we do that? Okay, let's do in 10 minutes. So this is my machine and I have to on it. Metasploitable 2 machine name. Where is Metasploit? This is Metasploitable 2. So this machine is made for testing purpose only. This is a vulnerable machine. कि ये Unix का Linux का you can say the vulnerable machine जिसके अंदर outdated applications है सारे. So इसके अंदर अगर से आपको इसको exploit करना है तो just इसके अंदर जो भी vulnerability है you have to use that and you can exploit anytime. Metasploitable will use this method to exploit it. Okay, so यहाँ पे आपको लॉगिन कैसे करना है? इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या आ रहा है? Can anyone just see and tell me? MSF admin. Can you see? मैं टाइप करूंगा तो दिखेगा नहीं. MSF admin. Okay, to log in with the MSF admin to get started. So MSF. I think ये machine stuck हो गया. Again, what I'll do, I will restart this machine. Do you know, guys, about Nmap? What is Nmap? Nmap tool. No, sir. Okay, so Nmap is a tool, guys, which is used for, you can say, network VAPT. You can say, because see, the full form is network mapper. So आपके नेटवर्क के अंदर कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है, कौन सी डिवाइसेस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है और कौन सी सर्विसेज आउटडेटेड है उनके अंदर, वो सारा चीज आप देख सकते हो. ओकर से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका वर्जन्स क्या है, एवरीथिंग यू कैन से. ओके, MSF admin password is also MSF admin. यहाँ पे मशीन लॉगिन हो गया. तो यहाँ पे जस्ट मैं इसका आईपी एड्रेस देखता हूँ. आईपी एड्रेस देखने के लिए क्या कमांड रन करूंगा? if config. Config. तो यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस क्या आ रही है? 192.168.52 something. No. So what we will do is that we'll see that whether we are able to do ping with this or not. और यहाँ पे ये मशीन ना मुझे इसके बाजू में चाहिए होगी. बट या नो प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको रखते हैं. मशीन को पहले देखते पिंग कर पाते क्या हम लोग. सो पिंग 192.152 समथिंग क्या था, जस्ट अगेन वी विल सी दैट 152.141. सो या इट इज दिस ओनली. यहाँ पे मैं पिंग कर पा रहा हूँ. पिंग का मतलब क्या होता है गाइस, कैन एनीवन टेल मी? कि मैं ये मशीन से कनेक्ट कर पा रहा हूँ. ओके, सो अगर से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, सो इट मीन्स आई कैन ट्रांसफर एनी फाइल्स एंड आई कैन इवन अटैक ऑन दिस मशीन. ओके, सो यहाँ के आप फाइल्स देख लो, फिर मैं यहाँ के फाइल्स वगैरह कुछ देखने वाला हूँ नहीं. जस्ट यहाँ पे देख रहे हो आप क्या क्या फाइल्स बनी है. इसको मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ. ये मेरी वल्नरेबल मशीन है.
यहाँ पे मुझे गाइज अपना 2-3 लोग का नाम बता दो, सो आई कैन शो यू दिस काइंड ऑफ नेम देयर ओनली। ओके, सो LS यहाँ पे आपको ये सब दिख रहे हैं, कोई अपना नाम बता दो, 2-3 लोग। मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, टच से बताओ। जस्ट आपको खाली नाम बताना अपना, सो मैं आपको ये मशीन को हैक करके वो मशीन पे दिखा सकूँ, काली मशीन पे। पार्थ बोस। पार एंड एनीवन एल्स? ओके, आई पुट माय नेम आकाश। ओके, सो यहाँ पे आप मैंने जैसे बनाया, एंटर किया LS करके, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पार्थ दिख रही है मुझे, पार्थ एंड आकाश। कैन आई सी permission denies there, no? Means I have to switch to root user. So what MSF admin is the password to switch into root user? Failure it is giving, so whether it is root? No. Okay, so I have to switch into root user, MSF admin. So why I'm getting again a failure? Okay, yeah, see, but see, there is a mess root and CD-ROM home init are init and dev etc. These kind of folder are there. So we'll see that I can communicate with this machine. I just know IP address. Okay. So there are few steps. यहाँ पे मैं मशीन का वर्जन वगैरह देख सकता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी पोर्ट्स वल्नरेबल है। तो जस्ट मैं अनमैप का यूज करके मैंने जो आपको बताया -SV सर्विस और वर्जन वगैरह स्कैन करने के लिए है। ओके, -O ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, तो ये मशीन का भी मुझे टोटल डिटेल ला के देगा। इट माइट बी टेकिंग टाइम। सी -SV किसके लिए है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्जन ऑफ द सर्विस रनिंग ऑन दिस पोर्ट। सो जो सर्विस रन करे उसका वर्जन क्या है। ओके, सो यहाँ पे गाइस कैन यू सी दीज आर द सर्विसेज FTP SSH टेलनेट SMTP और उनके वर्जन्स भी आगे लिखे हैं। ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन MSF कंसोल। MSF कंसोल क्या है गाइस? ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लॉइटेड यू विल फाइंड एंड यू डोंट हैव टू मेक एनी पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट। सो ये एक्सप्लॉइट का यूज करके आप वल्नरेबल मशीन को यू कैन हैव एक्सेस ऑफ दैट। ओके, सो मेटास्प्लॉइट इज रन ऑन है, तो ऑन हो चुका। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे VSFTP सर्विस वहाँ पे रन कर रही है, सो मुझे वहाँ पे उसके बारे में पहले देखना पड़ेगा। मैं जस्ट उसको क्या करूँगा, VSFTPD सर्च करूँगा। सो सर्च SEARCH सर्च, मुझे क्या सर्च करना, VSFTPD। तो मुझे उसका मिला एक ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यूज 0 0 क्यों करूँगा, क्योंकि उसके आगे यहाँ पे 0 नंबर है। ओके, 0 नंबर मैंने यूज कर लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, इन क्या करूंगा, ये मेरे मशीन का क्या कर रहा हूँ, सेट R होस्ट। रिमोट होस्ट मीन्स मैं IP एड्रेस डाल रहा हूँ, किसका, सामने वाली मशीन का। जितना है मशीन का कितना है, रिमोट यानी सामने वाली मशीन का। ओके, सो इसका कितना रहेगा, इफ कॉन्फ़िगर से करके देखेंगे तो 192.168 152 141 152 141। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट R होस्ट 192.168.152.141। ओके, यहाँ पे सेट हो गया है मेरा। देन व्हाट वी विल डू, आर होस्ट यानी रिमोट होस्ट जो मेरा टारगेट है, ऑलरेडी मैंने सेट कर लिया। व्हाट विल डू, अभी जस्ट मुझे वहाँ पे आ, अगर से मैं रन का प्रेस करता हूँ, देन लेट्स सी क्या होता है। देखो फाउंड शेल आ गया, जस्ट मैंने उसका एक एक्सप्लॉइट यूज किया, फाउंड शेल आ गया।
अब मैं यहाँ पे एलएस प्रेस करूंगा, देखो ये सारा चीज दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाके अगर से कुछ टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ या फिर नहीं भी बनाता हूँ, देखो एलएस करके देखा, ये सारा चीज दिख रहा है। MKDIR से तो मुझे परमिशन नहीं बनाने का। MKDIR पाथ नाम बताया था ना, PARTH, पाथ परमिशन डिनाइड आ रहा है ना। ओके, तो MKDIR ट्राई करता हूँ, पाथ MSF एडमिन, MSF एडमिन। ओके, सो ये पासवर्ड का इश्यू, बाकी मुझे उसका मशीन का शेल का एक्सेस मिल गया, देख रहे हो। जब मैं एलएस प्रेस कर रहा हूँ ये सारी फाइल्स रन हो रही है, तो बट यहाँ पे भी मुझे वही सारी फाइल्स दिख रही है। ओके, अगर से मैं शेल डालूंगा यहाँ पे, तो मुझे उसका शेल का एक्सेस मिल जाएगा। जहाँ पे मैं एलएस या फिर कुछ और करके, देखो यहाँ पे उसका मिल गया एक्सेस। तो यहाँ पे देखो जो दिख रहा था 1 2 3, उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। RMDIR क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, मैं 1 2 3 को रिमूव कर रहा हूँ। RMDIR 1 2 3, सी मैंने रिमूव कर दिया। एलएस करके देखो 1 2 3 नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे मशीन पे एक्चुअली जाके देखो, दिखेगा क्या, नहीं दिखा, क्योंकि मैंने उसे रिमूव कर दिया है। ओके गाइस, सो इस तरह से मेटास्प्लॉइट वी कैन यूज दिस मशीन टू hack, or we can say that exploit that vulnerability present into this machine, because in this machine is using a lot of vulnerability which is outdated nowadays. Okay, so in real machine or in any company, any system, we scan all the systems, and if any system is using this kind of already outdated services, so we can exploit this machine and we'll report that, and we'll tell that you shouldn't use this kind of services into your system. Okay, is it clear, guys? I think you got a bit idea what actually I did. Okay, थोड़ा बहुत Yes, आइडिया sir. पता। यस, सो सर्विसेज आउटडेटेड थी, दैट्स व्हाई मुझे उसका शेल का एक्सेस मिला, मैंने मशीन को हैक करके। ओके, अभी वो मशीन मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, फिर भी जस्ट सी मेरे पास अभी मशीन सामने से बंद हो गई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जिट कमांड या फिर एलएस कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, अबॉर्ट कर दूंगा सेशन, यहाँ से एग्जिट मारूंगा और बैक टू माय, क्या बोलते हैं इसको, काली मशीन। ओके, तो गाइस क्लियर है आज के सेशन का, कुछ डाउट है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल एंड जो मशीन एक्सपर्टेशन, आई थिंक द बेसिक आइडिया आपको मिल गया रहेगा। बट ये जो है ये पूरा यू कैन से योर करियर इज ओनली, अगर से आप करना चाहते हो, पूरी करियर भी है इसके अंदर की रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल एवरीथिंग, तो थोड़ा हटके होता है। ओके, बट आपको नॉलेज भी रखना चाहिए साथ साथ में सब चीज का। इज इट क्लियर गाइस? हेलो।